we all know that there are three p orbitals, px, py, and pz. So in each orbital, there will be a maximum of 2 electrons. So all total, there are 6 electrons present in p shell. So if 6 electrons means 6 group, that is group 13, group 14, group 15, group 16, group 17, and group 18. These elements are known as p block elements. Now in p block elements, the CBSE has divided the NCERT. You can see group 13 and 14 is there in class 11, and 15, 16, 17, 18. We have to study these groups in class 12. So in class 11, we are concerned with the topic, the groups 13 and 14. So group 13, that is boron family. Can you see the screen? The screen is visible to you all? Yes, ma'am. So in the screen, you can see group 13, boron, aluminium, gallium, indium, thallium. Now, mnemonics, you must be knowing how to memorize these elements. We can memorize these elements by some mnemonics like Bal Ganga in Thailand. बहुत लोग कहते हैं इस तरह से, बाल गंगा in Thailand. या फिर बहुत लोग और भी कहते हैं बैंगन, आलू, गाजर in थैला. So whatever is the mnemonics, you can learn these elements: boron, aluminium, gallium, indium, and thallium. Now, when we are studying any group, we should know the atomic number of the elements. First, we should know what are the elements in a group and what is their atomic number and how to write the electronic configuration. Children, we all know that boron with atomic number 5. Now, next to boron is aluminium. Next to boron is aluminium. Now, when you add 8 to 5, it becomes 13. So next element atomic number is 30. Again, you add 18, then it becomes gallium atomic number 31. Again, you add 18, you will get indium atomic number 49. Then you add 32, then it is atomic number 81, that is thallium. So just by adding, if you know the atomic number of the first member, you can write the atomic number of all the elements of the group if you are knowing the elements in sequence: boron, aluminium, gallium, indium, and thallium. Now, how to write their electronic configuration? So the nearest inert gas configuration we are writing boron, helium, then neon, argon, krypton, xenon in square brackets, and the valence electron configuration we are writing 2s2, 2p1 for boron. Helium atomic number 2, then 2s2 and 2p1. So total becomes 5. So this is how we write the electronic configuration. This boron belongs to period 2. That's why it is 2s2, 2p1. Aluminium belongs to period 3. So it is 3s2, 3p1. Gallium period 4. So it is 4s2, 4p1. Similarly, indium period 5, 5s2, 5p1. And thallium, it is a 6, so 6s2, 6p1. So just you see all of them, group 13, they are having 3 electrons in their valence shell, 2 in S and 1 in P. So NS2 NP1 is the general electronic configuration of group 13. NS2 NP1, the valence shell electronic configuration. Okay. Now, so children, if we are going to study about these elements, we should know. Do you have any doubt in understanding the electronic configuration? Anybody in the class? No, ma'am. No. Electronic configuration is okay. Now just see, this is a picture of the elements of this group. This is boron. It looked like black, hard, very hard and black. This is aluminium. This is gallium. This is indium. This is thallium. This is the pictures of these elements. Now in boron family, if we talk of the boron, the first member,
It exists in nature in the form of boric acid, that is H3BO3. These are the ores of these elements, or borax, Na2B407.10H2O, or carnite, that is Na2B407.4H2O. These are the how they occur, or how they are existing, or they can be obtained in nature. Now, if we are talking about the boron, boron is the first member of this element and it is a non-metal. So, agar hum baat karte, we are talking of the physical properties. What are the physical properties? So, boron is non-metallic in nature, and rest of the element, that is aluminum, gallium, indium, and thallium, they possess metallic character. So, boron is non-metal, extremely hard and black color solid, exists in many allotropic form. It exists in many allotropic form and very high melting point due to strong crystalline lattice. This is the crystalline lattice of boron. Now, just a minute. Now, in boron family, sorry. If we talk of the physical property and different properties of boron family, if we talk of different properties in the boron family, then let us see to the atomic radius. It is very, very important topic. And there is an exception. We can talk exception, but there is a reason behind the exception. That is, if we all know that as we move down in a group, what happens to the atomic radius? Anybody in the class? If we go down in a group, what happens to atomic radius? Suppose we are moving from boron to aluminum to gallium to indium to thallium. What is the general trend as we move down the group? Increases. Atomic radius increases. Very good. We all know that as increases. Increases. Very good. As we move down the group, we all know that there is an increase in atomic radius. Why? Because at every step, one new shell is being added. Okay. But just to observe carefully here in picometer, atomic radius of boron is 85 picometer, aluminum is 143 picometer, gallium is 135 picometer. Just to observe, aluminum se gallium chota hai. Can you see? Yes or no? Can you observe? Yes, ma'am. Yes, ma'am. As we are moving down gallium to indium, it is 167, and from indium to thallium, it is 170. Now, what is the reason behind it? Why it is like that? Why there is not a continuous increase in atomic radius? There must be some problem here. And there must be some problem. Yes, there is an increase. You just see, indium, when we are moving from indium to thallium, it is 167 picometer and it is 170. Slight increase, but almost equal, Okay? Why it happens? What is the reason behind it? Now, for that, you just see this, this one. Agar we are writing the electronic configuration, in gallium, just you see what is happening. 3D10 configuration is there. Argon, then 3D10, 4s2, 4p1. In aluminum, 3D, third shell is there. So 3D or subshell is there, but the 3D is empty. But in gallium, 3D is filled. So 3D is responsible for poor screening effect. Do you know this or not? Do you know or not? D orbitals and F orbitals are responsible for poor screening effect. Do you know what is screening effect? Or you want me to explain? You're not responding. Do you know what is screening effect? No, ma'am. You don't know.
Suppose the nucleus is here, okay, and so many shells are present in which electrons are present. Now this is the valence shell. So in between the nucleus and valence shell, if electrons are present, they will screen the valence shell, and nucleus will unable to attract the valence shell if so many electrons are present. Am I clear to this point? Suppose a teacher is teaching in front of a class. The student sitting in the last bench, teacher may not have a full grip on the student sitting on the last bench. All the time, the students in between the teacher and the last bencher student, they will be creating some disturbance. So the teacher cannot have a very good hold till the last student. Okay? Why? Because in between there is a screen. अगर मान लो मैं आपको पढ़ाती हूँ और मेरे बीच में और आपके बीच में एक पर्दा आ जाता है, तो शायद मैं आपको बहुत अच्छे से फेस ना कर पाऊँ, आपको बहुत अच्छे से अट्रैक्ट ना कर पाऊं, क्योंकि बीच में एक स्क्रीन है. तो जो इन बिटवीन इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो स्क्रीनिंग इफेक्ट प्रोड्यूस करते हैं. ठीक है. बट व्हाट हैपेंस टू डी? डी में तो 10 इलेक्ट्रॉन है, इट शुड प्रोड्यूस अ वेरी गुड स्क्रीनिंग इफेक्ट, बट ऐसा नहीं होता बिकॉज ऑफ द शेप ऑफ डी ऑर्बिटल. डी ऑर्बिटल का शेप तो सबको पता है, डबल डंबल, और साइज भी इसका काफी बड़ा होता है. बिकॉज इट्स बिग साइज एंड इट्स शेप, जो इसमें 10 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जो उनको स्क्रीनिंग इफेक्ट प्रोड्यूस करना चाहिए था वो नहीं कर पाते बिकॉज ऑफ इट्स साइज. सेम इज हैपनिंग इन एफ ऑर्बिटल्स आल्सो. एफ ऑर्बिटल्स भी जो स्क्रीनिंग इफेक्ट प्रोड्यूस करना चाहिए वो नहीं कर पाते. तो स्क्रीनिंग अगर नहीं होगी तो क्या होगा? न्यूक्लियस विल अट्रैक्ट द वैलेंस शेल टुवर्ड्स इट्स. एम आई क्लियर नाउ? यस और नो? Yes, ma'am. तो अगर ये गैलियम का न्यूक्लियस इज अट्रैक्टिंग द वैलेंस सेल, देन दे विल बी अट्रैक्टेड towards itself and the size decreases. Are you getting this? So what will you write? Why gallium is smaller than aluminum? Because अगर आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखते हैं, कैल्शियम के बाद 10 एलिमेंट्स आते हैं ना, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, ये 10 एलिमेंट्स बीच में है. और ये 10 एलिमेंट्स में डी की फिलिंग n-1 डी की फिलिंग होती है. n-1 डी की जब फिलिंग होती है तो क्या होता है? इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज गैलियम का इंक्रीज कर जाता है, क्योंकि बिकॉज ऑफ देयर पुअर स्क्रीनिंग इफेक्ट. इनकी वजह से पुअर स्क्रीनिंग इफेक्ट होता है और इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज डिक्रीज करता है. एज अ रिजल्ट व्हाट हैपेंस? द वैलेंस शेल जो है वो थोड़ा खिंच के नजदीक आ जाता है, साइज डिक्रीजेस. सो द रीजन इज क्लियर टू यू ऑल व्हाई गैलियम इज स्मॉलर देन एल्यूमिनियम. ओके. Yes, ma'am. Now, as we move from gallium to indium, what happens? Size फिर से इंक्रीज करता है, as we have already seen. तो साइज आप कहेंगे कि डी तो यहाँ भी है, डी तो यहाँ भी है, बट देर इज अ डिफरेंस. यहाँ पे डी के इलेक्ट्रॉन नहीं है, यहाँ है. तो देर इज अ बिग डिफरेंस ऑफ दिस. बट डी यहाँ भी है, डी यहाँ भी है. तो जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज की बात यहाँ हो रही है, द सेम इज हैपनिंग हियर. That means now the size increases. But again, though size increases very slightly here, here the involvement of F electron is there. D and F, poor screening effect. यहाँ पे क्या होता है? Lanthanoid contraction की बात आती है. Lanthanoid contraction, 14 elements of lanthanoid, they give a contraction and उसकी वजह से size decrease करती है. Size यहाँ से यहाँ बहुत ज्यादा increase होना चाहिए था, but वो slight increase हो रहा है. और ये जो स्लाइट इंक्रीज है, नॉर्मल मतलब आप कह सकते हैं नेग्लिजिबल इंक्रीज है, दैट इज बिकॉज ऑफ द लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन. तो साइज की जो डिफरेंस आपको मिल रही है, वन इज इन गैलियम, और दो थेलियम इज बिगर देन इंडियम बट स्लाइटली बिगर, ऑलमोस्ट सेम. तो यहाँ पे जो रीजन आता है बिकॉज ऑफ द पुअर स्क्रीनिंग इफेक्ट ऑफ डी ऑर्बिटल्स, और यहाँ पे जो रीजन आता है बिकॉज ऑफ लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन. तो साइज इज क्लियर टू यू ऑल? Yes, ma'am. Okay. So now we are proceeding the size. So this is the atomic radius and this differ. The ionic radius, there is a slight increase from top to bottom. You can just see ionic radius. Now the next is electronegativity. Electronegativity. Do you know what is electronegativity? Anybody in the class? Yes, ma'am. Tell me.
It is the property of the element to attract the shared pair of electron towards itself. मान लो कि दो एटम के बीच में एक बॉन्ड है. सपोज यू आर हैविंग any suppose HCl. तो H and Cl are sharing one pair of electron. एक बॉन्ड होता है, सिंगल HCl बॉन्ड होता है. तो अगर हम बात करते हैं HCl की, तो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है HCl के बीच में, और वो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को क्लोरीन अट्रैक्ट करेगा अपनी तरफ, क्योंकि क्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन हाइड्रोजन. डू यू नो दिस और नॉट? दिस हैज बीन ऑलरेडी टॉट इन द क्लास. So electronegativity is the property of the element to attract the shared pair of electron towards itself. और इसी की वजह से the covalent bond becomes polar. तो electronegativity की अगर हम बात करें from top to bottom, तो boron is smallest in size and it is most electronegative, that is 2.0 is its value. From boron to aluminium, the electronegativity decreases 1.5. Then again electronegativity increases slightly, 1.6, 1.7, 1. This is how there is a variation in electronegativity. Now we are talking of the ionization enthalpy. What happens to ionization enthalpy? It is also very important to note that do you know what is ionization enthalpy? Anybody in the class? What is this property? Ionization energy or ionization enthalpy. It is measured in kilojoule per mole. Anybody in the class who can speak what is ionization enthalpy? Okay. Ionize करने के लिए जो एनर्जी चाहिए, आयोनाइज मतलब एक इलेक्ट्रॉन वैलेंस सेल से निकालने पर. अगर आप एक इलेक्ट्रॉन को वैलेंस सेल से निकालते हैं तो नेचुरली वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन तो न्यूक्लियस से अट्रैक्टेड है, तो उसको निकालने के लिए तो कुछ एनर्जी चाहिए. मेरे हाथ में एक पेन है, मेरे हाथ से पेन निकालने के लिए आपको एनर्जी चाहिए ना? यस और नो? यस मैम. तो एक इलेक्ट्रॉन, टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम इट्स loosely bonded electron from its valence shell, the minimum amount of energy required is known as ionization enthalpy. और अगर आप correct definition चाहते हैं तो it is the minimum amount of energy required to remove an electron from the valence shell of an isolated gaseous atom. एक isolated gaseous atom के valence shell से एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जो मिनिमम एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, दैट इज कॉल्ड आयोनाइजेशन एंथैल्पी या आयोनाइजेशन एनर्जी. इट इज मेजर्ड इन द यूनिट किलोजूल. एनर्जी है दैट्स किलोजूल पर मोल. तो जस्ट यू सी द वैल्यू आयोनाइजेशन एनर्जी, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है. इसकी वैल्यू क्या है? फॉर बोरॉन इट इज अबाउट 800, देन इट इज 577, देन इट इज 579. यहाँ से यहाँ डिक्रीज हो रहा है, अगेन देयर इज अ इंक्रीज 579, then there is a decrease 558, again there is a increase 589. This variation it is called doo-doo. Down up मतलब पहले down फिर up फिर down फिर up. This is called doo-doo. Okay, du doo-doo, down up down up. Why it happens? Why it happens? Anybody can you guess? ऐसा क्यों हो रहा है? Of course, the same reason जो हमने अभी एटॉमिक साइज के लिए डिस्कस किया. बोरॉन इज द फर्स्ट मेंबर, स्मॉलेस्ट इन साइज, तो इसकी आयोनाइजेशन एंथैल्पी साइज से इनवर्सली प्रोपोर्शनल है ना. आयोनाइजेशन एंथैल्पी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज. तो ये बोरॉन सबसे स्मॉल है, तो इसकी आयोनाइजेशन एंथैल्पी सबसे ज्यादा. Now, as we move from boron to aluminium, size increases, so ionization enthalpy decreases. But from aluminium to gallium, again, because of the involvement of 3d10 electrons, poor screening effect, size decreases. So ionization enthalpy increases. Is it okay? Is it okay? Now, as we Yes, move, ma'am. हाँ, so यहाँ से बोरॉन सबसे छोटा है, तो इसकी आयोनाइजेशन एंथैल्पी सबसे ज्यादा है. बट एज वी मूव डाउन, एल्यूमिनियम इनका साइज बड़ा हो रहा है, आयोनाइजेशन एंथैल्पी डिक्रीज कर रही है. बट एल्यूमिनियम टू गैलियम अगेन साइज डिक्रीजेस बिकॉज ऑफ द पुअर स्क्रीनिंग इफेक्ट ऑफ डी ऑर्बिटल. इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ जाता है.
तो साइज घट जाता है, दैट इज व्हाई द आयनाइजेशन एंथैल्पी इंक्रीज्ड. अब गैलियम से इंडियम में क्या हो रहा है? अगेन द साइज इज इंक्रीजिंग, आयनाइजेशन एंथैल्पी डिक्रीज कर रहा है. फ्रॉम इंडियम टू थेलियम देयर इज अ स्लाइट इंक्रीज, बहुत थोड़ा सा इंक्रीज दिखाया था ना साइज की, मतलब ऑलमोस्ट सेम था. बट यहाँ पे लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन की वजह से आयोनाइजेशन एंथैल्पी काफी बढ़ जाती है. अब आप देखो सीक्वेंस, तो सबसे हाईएस्ट किसका है? बोरॉन का. आफ्टर बोरॉन इंडियम, आफ्टर इंडियम किसका है? गैलियम, आफ्टर गैलियम एल्यूमिनियम, एंड देन बिकम्स इंडियम. सो दिस इज द सीक्वेंस. डू पहले डिक्रीज करता है, फिर इंक्रीज करता है, पहले डिक्रीज करता है, डी यू, डाउन अप. Is it clear now? And the reason is also clear to everybody? May I proceed now? Yes, ma'am. Yes, ma'am. So these two Yes, ma'am. reasons Sure, are ma'am. very important: size and ionization enthalpy. Now this page is from NCERT. Complete detail of the properties are given, like atomic number it is given, the atomic masses are given, electronic configuration is also written, atomic radius, just now I have discussed the atomic radius, ionic radius, this is ionic radius, there is increase in ionic radius, then ionic radius of 3 plus ions and plus 1. So the boron plus 1 is not existing, aluminum plus 1 is not existing. We will be just discussing it later on. Ionization enthalpy, the first ionization enthalpy, second ionization enthalpy, third ionization enthalpy, it is all do. First decreases, then increases, then decreases, then increases. Electronegativity also we have discussed: 2.0, 1.5 aluminum, 1.6 gallium, 1.7 indium, and 1.8 thallium. Now let us talk about the density. Density, just to see what is happening to density. It is 2.35, then 2.7. Density increases, then 5.97 and 11. So density goes on increasing. Okay, at the mass increases, density is also in here increasing. Melting point, just to see, बोरॉन चूंकि इसका एलोट्रोपिक क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर होता है तो इसकी मेल्टिंग पॉइंट सबसे हाईएस्ट होती है, 2453 केल्विन, हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट. और ये इसकी वजह से क्यों होती है? क्योंकि इसका जो कोवेलेंट बॉन्ड होता है, बॉन्डेड होता है और काफी क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर होता है, दैट्स व्हाई. उसके बाद मेल्टिंग पॉइंट डिक्रीज कर रही है. और जस्ट यू सी वेरी यूनिक, बहुत कम होता है गैलियम का. गैलियम का मेल्टिंग पॉइंट 303 केल्विन, मतलब अबाउट 30 डिग्री सेंटीग्रेड होता है. 30 डिग्री. गर्मी के मौसम में अगर आप हाथ में गैलियम लोगे तो ये मेल्ट कर जाएगा, पिघल जाएगा, लिक्विड स्टेट में आ जाएगा गर्मी के मौसम. बट अगर आपसे पूछा जाए व्हाट इज द फिजिकल स्टेट ऑफ गैलियम, तो जनरली वी टॉक ऑफ फिजिकल स्टेट 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर. तो 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे तो गैलियम सॉलिड ही है. 30 डिग्री मतलब गर्मी के मौसम में जब आता है तो ये मेल्ट कर जाता है. Then the melting point increase. Now boiling point की अगर हम बात करें तो boiling point is also decreasing continuously. अब यहाँ पे देखो बड़ा ही यूनिक प्रॉपर्टी है गैलियम का. its melting point is 30 degree या 303 Kelvin and its boiling point is 2676 Kelvin. So that means a very large range of temperature is there where gallium can exist in the liquid form. That's why it is used in high range thermometers. तो ऐसा थर्मोमीटर जहां पर हमको काफी हाई रेंज ऑफ टेम्परेचर मेजर करना हो तो we can use gallium. This is the use of gallium here. Now the reduction potential. जब reduction potential की बात करते हैं तो बोरॉन का साइज छोटा होता है और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, इसकी आयनाइजेशन एंथैल्पी हाई है, तो ये आयनिक फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करता, मतलब B3 प्लस आयन नहीं बनाता. इसका +3 ऑक्सीडेशन स्टेट तो है बट +3 ये आयन के फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करता, आयोनाइज नहीं कर सकता.
हाँ, एल्यूमिनियम आयनाइज करता है, बट एक्वस मीडियम में इसका हाइड्रेशन एंथैल्पी हाई है, साइज छोटा है, और इसका रिडक्शन पोटेंशियल -1.66 है, फिर उससे -0.56, -0.3। ये डाटा आपको याद नहीं करना, बट ये आपको बताता है कि एज वी मूव डाउन द ग्रुप, जो +3 बनाने का जो टेंडेंसी है वो भी डिक्रीज कर रही है, और ये ऑलमोस्ट नहीं बनाता है। प्लस रिडक्शन पोटेंशियल शो करता है कि +3 ये नहीं बनाता है, और यहाँ पर -0.34 शो कर रहा है कि ये +1 ऑक्सीडेशन स्टेट में एग्जिस्ट करता है। थेलियम का ये जो प्लस वैल्यू है ये बता रहा है, ये अभी मैं पढ़ाऊंगी, इनर्ट पेयर इफेक्ट विच इज अ वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी। तो थेलियम का ये जो वैल्यू है +1.26, ये सजेस्ट करता है कि थेलियम +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में नहीं एग्जिस्ट करता, और ये थेलियम का +1 ऑक्सीडेशन स्टेट -0.34 ये सजेस्ट करता है कि थेलियम +1 ऑक्सीडेशन स्टेट में एग्जिस्ट करता है। ये दोनों में माइनस है, तो ये इंडिकेट करता है कि ये दोनों यानी कि गैलियम एज वेल एज इंडियम +3 में भी एग्जिस्ट करते हैं और +1 में भी एग्जिस्ट करते हैं, बट एल्यूमिनियम +3 में करता है, +1 में नहीं करता। द पॉजिटिव वैल्यू इज इंडिकेटिंग। ठीक है, चेंज कर लो स्लाइड। ये तो मैंने आपको बोरॉन का प्रॉपर्टी बताया था, यहाँ पर बहुत ही नटशेल में प्रॉपर्टीज लिख दिया गया है। बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज करता है, रेडियस इंक्रीज करता है एक्सेप्ट इन द केस ऑफ एल्यूमिनियम इज बिगर देन गैलियम, मेल्टिंग पॉइंट डिक्रीजेस अप टू गैलियम देन इंक्रीजेस, डेंसिटी जो है वो इंक्रीज कर रहा है, आयनाइजेशन एंथैल्पी डू फर्स्ट डाउन फिर अप फिर डाउन फिर अप, और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फर्स्ट डिक्रीजेस देन इंक्रीजेस। Now, what is inert? This is very important property, inert pair effect. Okay, inert pair effect क्या होता है? What is inert pair effect? Now, the p block elements में ये property देखा जाता है. In p block element, we find this property, inert pair effect, and this effect is very much pronounced in group 13 and 14. though 16 तक थोड़ा बहुत मिलता है, but सबसे ज्यादा 13 and 14 में ये property pronounced होती है. Up to 16, we can observe this property. And what is this property? Inert pair effect. Reluctance of S subshell electron to participate in chemical bonding. This effect increases down the group in 13 to 16. Now, I will explain you what is inert pair effect. Inert pair effect के लिए I have to go to again the slide, this one, this slide. इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वाले स्लाइड से ही इनर्ट पेयर इफेक्ट भी आपको बहुत क्लियर होगा। एक्चुअली इनर्ट पेयर इफेक्ट को हम कहते हैं क्या है? रिलक्टेंस ऑफ एस और वाइटल्स, ये वैलेंस सेल में इनका जो कॉन्फ़िगरेशन है 2s2 2p1, 3s2 3p1, 4s2 4p1, 5s2 5p1 एंड 6s2 6p1। तो इनके वैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? एवरीवेयर वी फाइंड there are 3 electrons in the valence cell, 3 electrons. That means these 3 electrons should participate in the bond formation. In boron, the size is very small, and there is 2s and 2p. The energy difference between 2s and 2p is very less. 2s और 2p के बीच में एनर्जी का डिफरेंस बहुत कम होता है, तो 2p के इलेक्ट्रॉन भी और 2s के इलेक्ट्रॉन भी बॉन्ड बनाते हैं. That's why it exhibit +3 oxidation state. +3 oxidation state में exist करता है. Now, as we move down the group, aluminium. Aluminium में क्या होता है कि 3s और 3p में थोड़ा सा एनर्जी डिफरेंस बढ़ जाता है, थोड़ा सा एनर्जी डिफरेंस थोड़ा सा बढ़ जाता है, बट यहाँ पे जो इसका हाइड्रेशन एनर्जी
जो है, मतलब इसका जो उतना डिफरेंस, ये दोनों के बीच में थोड़ा सा स्लाइट डिफरेंस होता है, बट स्टिल the s orbital and the p orbital electrons participate in bond formation. But as we move down the group, यहाँ पे क्या होता है, again the 4s and 4p के एनर्जी का डिफरेंस बहुत ज्यादा बढ़ जाता है इनके बीच में. तो डिफरेंस बढ़ जाने की वजह से क्या होता है, और एक और बात आ जाती है 3D, जो पुअर स्क्रीनिंग मैंने बताया. तो ये पुअर स्क्रीनिंग भी प्रोड्यूस हो रहा है, यहाँ एनर्जी का डिफरेंस भी बढ़ रहा है. देन व्हाट हैपेंस कि जो इसका न्यूक्लियस है ये 4s को ज्यादा अपनी ओर खींच लेता है. तो 4s को ज्यादा अपनी ओर खींच लेता है बिकॉज 4s इज मोर क्लोजर टू न्यूक्लियस एज कंपेयर टू 4p. ये ज्यादा इसकी ओर चला आता है. तो क्या होता है कि ये इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बना लेता है, बट ये जो दो इलेक्ट्रॉन 4s के हैं ये बॉन्ड नहीं बना पाता. मतलब बनाता है बट एट द कॉस्ट ऑफ हायर एनर्जी. और हमें पता है कि हाई एनर्जी के कॉस्ट पर जब बॉन्ड बनेगा दैट विल नॉट बी वेरी स्टेबल. तो ये दोनों बॉन्ड बनाता है, दोनों तरह का कंपाउंड बनाता है, +1 ऑक्सीडेशन स्टेट भी और +3 ऑक्सीडेशन स्टेट भी. गैलियम GaCl भी बनाता है और गैलियम GaCl3 भी बनाता है. तो इसमें कौन ज्यादा स्टेबल होगा? नेचुरली ये ज्यादा स्टेबल. ठीक है. एज वी मूव डाउन, ये भी वही बात है. अगेन 5s एंड 5p, इनका एनर्जी डिफरेंस बहुत ज्यादा बढ़ जाता है और यहाँ भी थोड़ा सा रिलक्टेंस हो जाता है क्योंकि इट इज कमिंग टुवर्ड्स द न्यूक्लियस. तो ये थोड़ा रिलक्टेंस शो करते हैं बॉन्ड बनाने में, ये बॉन्ड नहीं बना पाते हैं. तो +1 इज मोर स्टेबल एंड +3 इज नॉट वेरी स्टेबल. अब यहाँ पर जो बात आती है, देयर इज अगेन अ वेरी बिग डिफरेंस इन द एनर्जी ऑफ 6s एंड 6p. और यहाँ पे 4f के 14 इलेक्ट्रॉन्स का इन्वॉल्वमेंट यानी कि लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन का इन्वॉल्वमेंट शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से 3s जो है बहुत ज्यादा पेनिट्रेटेड हो जाता है टुवर्ड्स द न्यूक्लियस. बहुत ज्यादा पेनिट्रेटेड हो जाता है और ये निकल ही नहीं पाता. अगर ये बॉन्ड बनाना चाहे तो ये इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बना देता है, बट ये इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बनाने में नहीं निकल पाता क्योंकि इट इज वेरी क्लोज टू न्यूक्लियस. तो ये क्या करता है, ओनली एंड ओनली +1 ऑक्सीडेशन